Ladies and gentlemen, there's no time to waste. The time for delay and blame is over. The scientific community has told us that we have a 5 to 10 year window of opportunity. We know that the problems we face are made by human beings. Those worst affected by climate change are the least responsible for it. It is time to start looking in the mirror. This is her third morning on the earth. Untouched by any name, she is born in the house of Shikari, in the ancient tribe of the Beggars. The whirling time has not dared to date the existence of the Beggars. They have always been a part of the central highlands of India. This land is Begachak, home of Beggars in Chhattisgarh. शहर में तो मंदिर बनाने से देवी देवता मानते हैं। हम तो बिना मंदिर बनाने के नाव से देवी देवता ले मानते हैं। रूख हमारे दोस्त है तो रूख में देवी देवता ले मड़ा है। बड़े बड़े पखनाले भी देवी देवता के नाम से माने जाते हैं। हम जहाँ पानी है वहाँ देवी देवता के नाम से मानते हैं। The season is of resting, waiting for rains. Only action is along the national highway. 10 साल बने होते हैं। ये पक्की नहीं बन रहा, कच्ची रोड चलत रहा है, बैला गाड़ी चलत रहा है। अभी बड़े-बड़े कंपनी आ गए, बड़े-बड़े कारखाने आ गए, बड़े-बड़े फैक्ट्री आ गए। कई करोड़ एकड़ जमीन ले कब्जा कर करके सब फैक्ट्री कारखाना बन गए। Across the highway lives a family of langur, waiting. This hand pump is their only source of water. In the next 20 years, the total water demand in India will be very close to the total usable resources. Beyond that time, projections are not available. But it's obvious there will be an acute water crisis. ये भी वर्तमान में इसना हो गए थे, अपन जीवन में आने वाले समय में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो फिर पूरा आएगा उनके जमाना में फिर क्या होगा। 10 years ago, many Beggar families migrated to this area in search of water and arable land. Shikari was one of them. नांगर चलते चलते वो फिर कई साल हो गए, धीरे माटी तर पूरा बुहाते चालू हो गए। In Beggar mythology, earth is the mother. Using a plow is like cutting through her heart. Living on the hills, Beggars grew food, clearing small parts of the forest. Big, plain fields needed to be plowed. That was a sin.
The science behind this beggar myth has just been discovered. This technique, dibbling, causes minimal tillage. It is one of the intelligent ways of preventing soil erosion on steep slopes. But the damage had been done. Traditional shifting agriculture was banned. माटी पूरा बहाए गए तो पत्थर पत्थर निकल गए, कोई फसल भी नहीं हुआ, कोई दाना भी नहीं हुआ, पानी रहा तो पूरा ना राजरा नंदी का पूरा सूखा हो गया. Now, within a much shorter time span of just 10 years, beggars find the earth slipping from here as well. I find Shikari under his favorite tree. I realize this is not one, but 4 trees. Their lives intertwined, supporting, growing amidst all odds. खर जो थोड़ी नीचे में हिम्मत था, माटी था, वो तो बहा जाए तो बड़ा कठिनाई है. ये सोचे की बात है कि वैसे उखर जैसे दुख तैसे दुख हमरो है, जो पेड़ के जैसे दुख है तैसे दुख हमरो पर पहुंच गया. ये तो आंखी में दिखता पूरा तापमान, पूरा पानी नीचे चले गए, तूफान ज्यादा बढ़ गए. Like the beggars, lust for life still throbs in these roots. What does it say? What did you... I said that today is beautiful day. Today, this morning is We share this earth with 5 to 30 million forms of life. Birds too quick for the vision to catch. Flying lizards singing silently. Bacteria, fungi, insects, plants, sloth bears, elephants, tigers, pythons. Life is also non-human. It's obvious here. This is Nagaland. And she is my teacher here, Seno. You are in the middle of that forest and then you're just walking through a small footpath and you feel that, oh, this is my home. This kind of feeling which comes from inside, most of this comes from nature. You are just feeling beautiful being part of that. No? I don't really know how to express, but you know, it's... Oh. Seno's village, Chisami, is in the northeast of India, bordering Myanmar. Celebrated for its biodiversity, it is home to the Chakasang Nagas. Farmers, dependent upon their creativity with nature and on the grace of the Himalayas. To this ancient tribe, learning from nature comes simply. Forest teaches them diversity.
different trees growing in harmony. Water, flexibility. Nagas mirror this. A small patch of land, but we have more than 20 types of crops. Little 1, 2, 3 plants of one variety. Enriching this bounty are many rare wild herbs. This people make decoction, and we can also dry and then keep it. This is very good for malaria. This medicine. And this also we use it. We do like this. If there is a wound here, then to stop the bleeding, then we use this also. Local shampoo. Yes. This is Harimi Kepuni, and we use it for shampoo. It's good for this removing dandruff, and the hair will be shining black. Conditioner plus. Upon the shoulders of these tiny, precious genetic resources rests our science, medicine, agriculture. Legend has it, if you look too hard for the rain, it disappears. Sajuben tries, but the wait has been arduous. Rains are already a month late. And that means a lot when you're waiting for the children to come home. The village is empty, but for the elders and a few children. Rest are on the yearly migration, gone for the 8-month journey outside of home. Homecoming will be only when rains quench the thirst of Mother Earth. The village is Umaria, near the run of Kutch, the boundary between Pakistan and Gujarat in northwestern India. Home to the tribe of the semi-nomadic herdsmen, the Rabaris. Otiyadi pagadi pero maldario. Otiyadi pagadi pero relo. Pagadi perin tame dor bario. Otiyadi pagadi pero relo. Chomasana divaso aja maldario. ચોમાસાના દિવસો આજા રેલો બીજા માલને ચરવાનું સારું હતું બાવેડા હતા એટલે કોઈ પેડા કાતરા મળતા કોઈ જગ્યામાં વરસાદ ટાઈમ થતો એટલે ઘેર જતા રહેતા પણ હવે વસ્તી બદલી જાય ભગવાને બદલી ગયા છે વરસાદ જ નથી આવતો Children of village Umaria have been living here for the past 8 months. The region is called Wagad, land of the winds.
Once, this was all jungle, free earth, for use of animals and humans alike. It was known for an abundance of grasses, lush, inviting. Rabaris were welcomed by the few farmers who lived here. Sheep and goats were a source of fertility for their fields. પહેલાં કશું આપતા જ નહોતા. પહેલાં માલવાળા જ્યાં જતા જ્યાં ફરતા રહ્યા. અત્યારે તો ગામની અંદર તો પૈસા ના આપો તો વસ્તી રહેવા નથી દે એમ. 5-6 ગામના છે, 1 લાખ ઉપર ટપી ગયા છે. હા, 10 ઘર છે. Now, conflicts with farmers are common. They have increased since the delay in rains. Farming has begun. Shepherds and their sheep are now unwelcome. સોળો બગડો થઈ ગયો ને ત્યારે પડતર થઈ ગયા તો કંઈ મળે નહીં. રોડો ઉપર જ રોકવાનો હોય છે મોટે ભાગે. যেহেতু পৃথিবীটা গঠিত দিন এবং রাত্রি, উঁচু নিচু, ভালো মন্দ, হ্যাঁ, সাদা কালো, এটা নিয়েই কিন্তু গঠিত। এটা আগে ভাবা দরকার আমাদের। এটা আগে আমাদের ভাবা দরকার যে দুটো, আমি শুধু খালি ভালোটা আমার বাড়িতে মরলো কেন, আমার বাড়িতে বিপদ এলো কেন, আমার ঘরটা পড়ে গেল কেন, এটা বললে হবে না। এটা নিয়েই জগৎ। যিনি উত্থান করেছেন তার পতন করেছেন। Between the shores of creation and destruction flows the river of India, Ganga. Before merging with the ocean, Ganga leaves behind the earth she has gathered, depositing the silt, the sand, creating the world's largest mangrove delta, Sundarbans. The delta is Ganga's playground. She creates it and then destroys it. তবে বাঁচবার একটা উপায়, ওই নদী বাঁধ অল্টার করে করে যাচ্ছি। এই একটা নদী বাঁধ ছিল, ওই গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, তাল গাছ, মরা একটা তাল গাছ, ওইখানে কিন্তু জনবসতি ছিল, কিন্তু ওখান থেকে মানুষজন উঠে চলে গিয়েছে। আবার 200 ফুট অন্তর একটা বাঁধ হয়েছে, ওটাও কিন্তু আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নদী গর্ভে চলে যাবে। মানে তোমার বাড়ি যেখানে আছে, হ্যাঁ, সেখান থেকে আরো পিছোতে হবে তোমাকে। আমাকে আরো পিছিয়ে যেতে হবে। এরকম কয়েকটা পরিবার এখান থেকে পিছিয়ে পিছিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। Shukdevta tells me if I shampoo my hair with hibiscus, it will not turn grey so easily. He ought to know. He lives on the banks of the mighty river, farming 2 bigha of Sundarban Delta. His home, his farm, is at a level lower than the river. This fragile mud bank is the only barrier protecting his home from the river. সেটা বলতে চাইছে এই যে আমার যতটা জঙ্গল দরকার ততটা আমার ফিরিয়ে দাও। সেটা বলেছিলাম যে আমার যতটা খাদ্য দরকার যদি আমি না পাই, তাহলে আমি খাদ্যের জন্য হয় লড়াই করব, না চুরি করব, যাই কিছু করব, ধাক্কা মারবই। ঠিক তেমনিভাবে বারবার সিগন্যাল দিচ্ছে এই যে বন্যা, খরা, ধস বা ভূমিকম্প,
এটাই প্রমাণ করে যে তোমরা কিছু না কিছু আমার ক্ষতি করছো, কিছু না কিছু আমার ক্ষতি করছো, না হলে আমি তোমাকে ধাক্কা মারবো কেন এমনি এমনি? আমাকে আঘাত দেওয়ার ফলে আমি তোমাকে আঘাত দিতে চেষ্টা করছি। অর্থাৎ এই যে এলাকাটা আমরা আছি এটা কিন্তু বিপদ সংকুল এলাকা, তার জঙ্গল সীমানার ভিতরে আমরা আছি। বারবার ধাক্কা করে বলছে হঠাৎ আমার জঙ্গল এখানে তৈরি হয়, এটি হচ্ছে কারণ। প্রকৃতি বলছে তো। The river is tidal, connected with the sea. Her salty waters rise and fall every 6 hours. Rhythm and sounds of the river. That is what time means to Shuktepta. Over years, he has noticed them change. In this interplay of river and land, a new dimension has opened. Sea's waters rising globally. What it means for the river is that she has to meet the sea at a higher level than before. For that, she tries to make space, to cut through the islands, to widen herself. The delta is slipping beneath the waters, and the mother silt that creates the delta is coming, but lesser and lesser. Little of Ganga's waters now reach the sea. Much of her is dammed by man, and along with her waters, the mother silt as well. আমি নৌকায় বসছি বা কেউ ফুটো করে দিল তালাটা, তাহলে নৌকা ডুবে যেতে পারে। আমরা যারা প্যাসেঞ্জার এর উপরে আছি, ফুটো করে জল তুলছি, কলকারখানার ধোঁয়া ছাড়ছি, ভিতরে প্রাকৃতিক গ্যাস তুলে নিচ্ছি। Heart, the weekly bazaar, is a space to trade many things, stories included. It is said of a time when digging 1 foot into the earth would reveal deep sources of water, clean, pure, refreshing. Now the sources are dry, water a precious commodity. Of the reasons, many stories float. Some blame evil spirits, gods, fate, and some point across the heart to the bauxite mines. दलदली क्षेत्र है, 75 गांव हो जाड़े गए वहाँ, पूरा बॉक्साइट खोदान का नाम से। बॉक्साइट पूरा खोदान, पूरा मट्टी ले खोद है, पूरा पखना निकलता है। वो जब वहाँ बारूद फुटता है तो पानी धरती डोलने से और पानी नीचे चले गए। Bauxite is a porous rock. When it rains, it absorbs the water, releasing it gradually over time. Mining this rock can damage the mountain's ability to retain water, leading to a drying of water bodies.
Shikari is taking us to see this area's biggest waterfall. यहाँ पूरा पानी बहा है, पूरा धार चला है, वो झरना से पूरा पानी गिरा है, पूरा गद 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 पानी गिरा है। तो अभी अब यहाँ आके देखता तो वो टिप का पानी नहीं को, पूरे झरना साफ सुखाए गए, पूरा बहाव है, तनोक नंदी पूरे सूखा पड़ गए, पूरा अंकाल पड़ गए। ये 12 महीना बहती थी नदी? पूरा 12 महीने नंदी, 12 महीना पूरा पानी के धार कूदत रहा है, तो पूरा बाजा पूरा खड़ 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 पानी के धार आवाज आवे, आस पास ले पूरा आवाज जावे। ये तो पूरा सूखा पड़ गए, पूरा पौधा पौधी पूरा। चिड़िया भी खत्म हो गई। On the way back, I find Shikari digging a jhiriya, an underground cave where the river hides some of her waters. ये सब चिड़िया मन पानी पी, झिरिया कोरे हैं, चिड़िया सब चिड़िया ही तन चिड़िया पी, बंदर पी, सब झिरिया कोर के कोहिन झिरिया कोर हैं, सब जीव जंतु आई तन पानी पी करके। कहाँ छुपे घनश्याम। They say a wandering shepherd can smell the birth of a rain cloud. Pressure to go home is mounting from within and without. The precious crop being cultivated is BT cotton, a genetically modified crop that has made India world's number 2 producer, consumer, exporter of cotton. Traditional cotton is rain-fed. BT is planted in dry summers. More and more of Earth's fast depleting groundwater is used for irrigating the BT. Here, the water table is falling by as much as 3 to 5 meters per year. Instead of growing food, much of her is now diverted for exportable crops like BT. વર્ષ પહેલાંથી સારું હતું, ઉનાળાના બીટીનું વાવેતર ન થતું. પછી ત્યાં આપણા વાગડની અંદર જતા તો કાંઈક પડતર ડુંગરાળ જમીન જોવા મળતી. હવે તો ડુંગરાળ જમીન જોવા મળતી નથી. જમીન બધા ખેડૂતો માથે પહેલાં હતા, બધા ખેતી ખેડીને બધા વહી ખાઈ ગયા, બધા લઈ ગયા. કોઈને ખેતરમાં આવતા એ બરફને લઈ ગયા, કોઈ ડુંગર ખોદીને ખેતર બનાવી દીધું. Requiring heavy energy inputs, this global industrial agriculture is one of the main contributors to global warming. It has little use of Dungra or his sheep. માલની અંદર અત્યારે ખેતી વવાય છે ને, તે એકલી જે ધાન વસ્તુ પાકે છે એ બધી દવાથી જ પાકે છે. પહેલાં દવાનો હિસાબ ન હતો ને ખાવાની અંદર, એટલે દૂધ સારું આવતું, ચોખ્ખું દૂધ આવતું. માલની અંદર ચરબી વધારે વધતી એટલે ચોખ્ખું દૂધ આવતું. અત્યારે માલની અંદર ખોરાકમાં દવાનો હિસાબ આવી જાય એટલે માલની અંદર ચરબી ઘટી જાય ને દૂધમાં પણ હિસાબ ઘટી જાય. The nomadic shepherd has been excluded by the milk industry. Selling for meat culturally is a taboo. Fine synthetic wool
has replaced the coarse sheep wool. The only real income Doongra has is selling the sheep's young. Each year, the numbers of offsprings are dwindling. પાણીના રૂપિયા વધી જશે પણ દૂધના પૈસા નથી વધતા હજી અમારા. સાંભળ્યો તો અમુક કહેતા હશે કે બોટલ અમુક લેતા હોય છે ગામમાં તો કે છે 15-20 રૂપિયાની હોય છે. અમારું દૂધ તો 10 રૂપિયા નથી લેતા, 12 રૂપિયા નથી લેતા. પાણી મોંઘું થઈ ગયું, અમારું દૂધ ઓછું થયું, કિંમત ઓછી થઈ ગઈ. તો તમારે હવે પાણીનો વેપાર કરી તો વધી જાય ને. There are 3 types of van. Van, motor van and magic van. Progress. India's population is progressing at a staggering rate of 45,000 births per day. কিন্তু জমিটা পরিধিটা বাড়ছে না। জমির পরিধি কি বাড়ছে কি? কমতি হবে। কমতির ঘাটতির জন্য কি চাষ করলে, কি বেগুনটা চাষ করলে এত বড় হবে, কি বেগুনটা চাষ করলে একটা গাছে 10 কিলো হবে, তাহলে একবারের জায়গায় দুবার ফসল, দুবারের জায়গায় 3বার ফসল। তাহলে কি করে জমির উর্বরতা থাকবে? আমাদের সুন্দরবনের সমস্যা, সুন্দরবন কেন সারা ভারতবর্ষের সমস্যা, পৃথিবীর সমস্যা। Neighboring districts are facing drought-like conditions. God has been merciful here so far. Last year, there was a cyclone. River breached the boundary, flooded the fields. The frequency, intensity of cyclones and storms has increased. Waves are getting higher. पानी यदि अंदर में आइए तो कैसे फसल होगा? तो भूखा है, हम चले जाएंगे, देश से चले जाएंगे, स्टोर, ब्रिक भाटा, मिल। Last year, river salty water destroyed Shuktipta's paddy plants. नदी के इतना समीप रहते हैं आप, भय लगता नदी से? যে জায়গায় থাকে সে জায়গাতে তার ভয় পর আস্তে 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 কমতে হবে। Growing in challenges develops courage in seeds too. Instead of the expensive hybrid seeds, Shuktipta chose the local, homegrown matla. It flourished. Many indigenous seeds can survive droughts, floods, or salinization. 3 major impacts of climate change. Once upon a time, when the earth was still a child, she was thirsty. Little Earth drank so much water
that she burst into floods, flowing into streams, rivers, through the mountains, across the valleys, so much that she got tired. She bundled up her thirst and hid it in a tiny seed. From that time, seeds are sacred. They hold the earth's thirst, her desire, in them. Seno's father taught her to learn from the seeds. Their resilience, their courage, to battle, to bend, to fight, to yield, to grow. We grow different types of paddy varieties. Some are sticky, some are white, some are creamy, some are red. But they hear of changes happening. Many traditional seed varieties are disappearing from the earth, and along with them the farmer's ability to innovate, to survive. Slowly new things are coming. All these are very alien to our society, our communities. Bringing seeds from very far place with some packet written, some brand names and all. We don't have those things. Ours is just we pick up from the garden, from our june fields, and then, oh, these are good. These have to be kept as seeds. What is already there, what is gifted by nature, is best suited to that place. And when we try to change, then it is changing the whole system. We are creating some confusion even amongst the ecosystem of our land. Confusion has already set in. Rainfall has become erratic, climate unstable. Last year, there was no rain. This year, too much. This is really not hopeful, na? It's not favoring us. Flower Thopilachapa has been blooming in the harvest season, a sign that the rains will continue, potentially disastrous. We, as human beings, as mankind, we are overusing our resources. That is where the problem is coming. We are over-exploiting our resources. And I think here is the stage where the nature itself is reacting. Nature is reacting back to us that no, if you treat me this way, I am going to be like this. We can already feel it. It may not be big at one go that it is visible, but we are feeling it. We are feeling that change. This lightning sometimes brings hailstorms. It's accompanied by hailstorms. So everyone used to be very worried, and everybody prays silently at home that the paddy plants will be safe. That side, especially beyond the mountain, that side, I'm sure there is some hailstorm also, because even the sound itself is not very pleasant. नमस्कार जी, क्या चल रहा है?
यहाँ पे सिंचित रोपण के लिए सफाई किया जा रहा है। अच्छा, सफाई मतलब से बोर मतलब लगा है यहाँ पे, वहाँ पे कहने मतलब सिंचित रोपण लगाया जाके सागौन का पौधा है यहाँ पे। सागौन का पौधा। और ये बाकी पेड़ों को? ये जो है सफाई करेंगे, जब खुलेगा तभी इसमें लगेगा। अच्छा, तो इन पेड़ों की उपयोगिता नहीं है क्या? नहीं, इनकी उपयोगिता नहीं है इनकी। अच्छा, आप कहाँ से? वन विकास निगम। देख रहे झाड़ गिरे मत। This process will destroy many named, unnamed roots, plants, medicinal herbs, firewood. Teak trees will be planted here. Later, they will be cut and most likely used as furniture. Shikari is at his parents' home. He has brought with him some rain, some news. Good news is that the government is planting some trees. Bad news that the government is planting those trees on a land where beggars grow their food. एक बीघा बिल्कुल रखने नहीं है भारत भर में। काका, अभी खेत में क्या हो रहा है? एमा खूटी गड़ रहे, खूटी के बाद में वो गड्ढा खोदाई हुई, गड्ढा खोदाई के बाद में पौधा लगा ही, तहाँ गाय बचिया आदमी तीदमी नांगर बकर पूरा मना बंद जंगल जमीन बोल रहे। तो इस खेत का पट्टा आपके पास है? हाँ है साहब, और उसी में देख वो पेड़ लगाए रहे। तो आपको क्या कहा इन्होंने? घूस कह रहे हैं कि तुम्हारा बात हम नहीं मानता, नहीं तो सीधा जेल चले जाओ। इस सरकार जगह से इस ऑर्डर आ रही है, ऐसे बोल रहे हैं। हम उसको तो डरता भाई, हमारे से तभी कोई दत्त का हमने नहीं मिले अनाज। इनका खेत के ऊपर क्या हो रहा है? कहाँ नहीं मालूम वो हमको। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं पूछ ले, हम नहीं मालूम। नहीं वही वाले पूछ रहे। हाँ यहाँ पौधा लगेगा यहाँ। चलो निकलो यहाँ से, हमारा बाप का जंगल नहीं है। तो अगर आपको यहाँ से निकलने को बोले तो आप लोग कहाँ जाइएगा? नहीं जाए, कहाँ जाए हम, उसको हमारा को पूरा खत्म कर दे। जो तेग बेगा हान जंगली में जो हान उसको खत्म कर दे सरकार, हमको जिंदगी मत रखे। फिर हम एक नाम बिल्कुल मत बतावे ना, हम खाल समझान, लेकिन हम जंगल में जंगल से हम कहूँ नहीं जा सकते। ये ना घुचन नहीं भले काट डरे मार डरे जो हमने वो जेल में वहाँ से हम भले खत्म हो जाए, जेल में भले सर गल जाए, लेकिन हम यहाँ से जंगल से हम सुनन नहीं। Nohar Kaka tells me this drive is taking place in 7 Adivasi villages. It will affect the lives of about 100 indigenous people like himself. इस जगह में पौधा लगेगा। आपके पास पट्टा है? है। उसके बावजूद वन विभाग आ रहा है? आ रहा है, हाँ। और आपको कह रहा है कि यहाँ से निकलो, ऐसे बोल रहे। Nohar Kaka has tried to reach the district collector unsuccessfully. This time, the camera is to be the medium. They are starting, in fact they have started, I was there, I was filming today, and they have started this in about 7-8 villages in Borla. They are doing plantations. Plantations in their agricultural land which has been given, this is their
Rain clouds announce the wandering tribe's homeward journey. Rubaris pour into the highway. It will take them 8-10 days to get home. But there is no rush. Each step brings them closer home. Through the speeding conveyors of India's booming economy, they navigate artfully. It is a boom that has ignored most of the traditional people, like Dungra. Most, but not all. India's highway has a big heart. It allows both the past, the present. Of the future, nothing can be said. In one of the heaviest hailstorms to hit the state, about 85% of standing paddy crops amounting to over rupees 46 lakhs has been destroyed. The whole year's labor of farmers who were anxiously waiting for good harvest this year has gone to waste. This is that day. And this is today. Part of the paddy field is also destroyed by flash floods. Yeah. And like this field of mine, many other fields are also washed away, which are close to the river. And this year, because rain is just timeless, that people who have cultivated, who have got fields next to the streams, most of the families have their own stories to tell, that some parts are taken away, I feel that when the production for profit doesn't come down to balance with the production of life, the production of livelihood, then we don't have hope. If we are not ready for that balance, balancing between production of livelihood and production of the so-called money economy or the profit, then I think it's going to get worse. Global temperatures continue rising. How nature will respond to that, no one can say for sure. আমরা সমাধানের পথটা কোথায় যাব? যেহেতু বিশ্ব জুড়ে এর কানেকশন আছে। এই যেটা বলছেন যে কলকারখানা উন্নতিকামী দেশগুলো করছে, আমরা কিন্তু সুন্দরবনের মানুষ করছি না, কিন্তু আমাদের সুনামিতে ভুগতে হচ্ছে কিংবা সাইক্লোনে ভুগতে হচ্ছে। তা আমরা কি করব? Shukdipta knows he has limited time on this part of the earth before the river claims it back.
he also knows he is a part of the timeless river of life. এখন শুধু সময় এসছে প্রত্যেকটা মানুষের বোঝা যে প্রকৃতিকে আমরা কি করে রক্ষা করব। Since the past 7-8 years, the earth in Shukdev care has been exposed to no chemicals, fertilizers or pesticides. Instead, he banks on the huge network of life around him. For manure, he depends upon his cow and his earthworms. Aquatic fern azolla helps him fix nitrogen in the soil. জমির চতুর্দিকে একটা ড্রেনেজ, এই ড্রেনেজে জলটা ভরে নেওয়া, তাতে কি হয়, প্রথম সাশ্রয় হয় যে তেল পুড়িয়ে মেশিন চালাতে হয় না, আর ওখান থেকে ছোট থালা দিয়েও গাছের গোড়ায় জলটা দেওয়া যায়, এটা একটা সুবিধা এই ড্রেনেজ। When pests attack his crops, Shukdipta depends on butterflies, fishes, spiders and grasshoppers. সেটা তো নিয়ন্ত্রণ করছে তা প্রকৃতি, সবার সঙ্গে সবার তো একটা ইন্টারনেট ভাবে তো জড়িয়ে আছে। He tells me there are enemy insects and friendly insects. Enemies are the food of the friends. So if you don't want enemies, keep friends. And the best way to keep a friend is to be one. গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা শুধু ভারতবর্ষে, মানে পৃথিবীর সূর্য যদি গরম হয়ে যায় কি শুধু ভারতবর্ষে পড়বে? আমেরিকাতে পড়বে না, জাপানে পড়বে না, হল্যান্ডে পড়বে না, রাশিয়াতে পড়বে না, ইউরোপ মহাদেশে পড়বে না, শুধু কি আমার ভারতেই পড়বে তা নয়। যত কোটি মানুষ পৃথিবীতে আছে তারা প্রত্যেকটা মানুষ যদি সচেতন হয় যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আমরা যদি কেউ ক্ষতি করে থাকি, আমরাই করেছি, রক্ষা করলে আমরা করব। এবার ভারতবর্ষ করলো, জাপান করলো না, জাপান করলো, চীন করলো না, চীন তো বাদ দেওয়া ওগুলো, তা তো হবে না, কারণ সমস্তটা জুড়ে উপরে তার কন্ট্রোল হচ্ছে। आप लोगों के दर्शन आज यहाँ पे हो गए, कैसे है? जी सब ठीक है, वही देखने के लिए आए थे क्या काम चल रहा है यहाँ करके काम। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा बाप का जंगल नहीं है। जो इतना दिन से जब 10 साल सुन रहे हैं, क्यों वहाँ पौधा लगा रहे हैं भाई? कम से कम उसको जो पट्टा है, पट्टा जो बन गए, कम से कम पट्टे में इनके लिए बनाना बहुत बड़ा कठिनाई है। गलत हो गए क्या अभी मतलब आज आ गए गलत हो गए क्या? नहीं बताइए क्या है, इन लोग को पट्टा दिए हैं, पट्टा मतलब इनका पट्टाधारी जो है उसको छोड़ के मतलब अलग से खूंटी गड़ाना था, मतलब तो उस क्या है जगह में मतलब देख रेख के लिए इन लोग के लिए मतलब काम करने के लिए है। नहीं मुझे समझ नहीं आया। इनका पट्टा जो दिए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, शासन के तरफ से पट्टा दिए हैं, उसके हट के है। अच्छा जी हाँ। नहीं कल जो मैंने देखा था वो तो इनकी पट्टा वाली जमीन पे ही हो रहा था। नहीं ठीक है सर, उसको अपन चेंज कर मतलब ये कर देंगे, उसको अपन नहीं करेंगे, है ना। नहीं देखिए गलती से अगर लग भी गया होगा तो उसको अपन चेंज कर देंगे या नहीं करेंगे उसको। जो इन लोग को दुख लगे वो टाइप के काम अपने को नहीं कराना है। दुख लग रहे सर जी। नहीं लगेगा ना, दुख काहे के लिए लगेगा, ऐसी चीज़ नहीं है। अरे हम तो हैं भैया, जंगल वाले आपके साथ में हैं, साहब लोग हैं, हम लोग हैं, ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोग सब साथ ही में हैं, है ना। आप लोग जैसा कहोगे वैसा काम करेंगे। सर जी नहीं होगा ऐसी बात नहीं। कोई तुम्हारे यहाँ से भागो, हमारा कौन बोलता है भागो कर? नहीं कोई नहीं बोलते। Beggars have many friends in the forest. The Department of Forest is not one of them.
Last year, a friendly flower told them that rains would be delayed. They were. In fact, there was a drought. Another friend saved them. A long-forgotten variety of rice that a Bega elder dug out from his grain store. Satka, literally 60 days. It takes little water and matures faster than the market varieties. 12 प्रकार के बीज बचावे पहली हमारे जो जंगल में आदिवासी बेगा आदिवासी मन जंगल में बहुत सारी बीज बचावे अपन घर में रखे छोटे छोटे पतली में बना के पत्तल कर जो पतली बनाए के बढ़िया रखे में बीज तो 5-6 प्रकार कर बीज अभी 5 प्रकार बीज बचे 7 प्रकार बीज चले गए। ये बीज को आप ले जा रहे हैं? हाँ ले जा रहे हैं। इसको मैं सब जगह फैलाऊं करके सोच रहे हैं। बीज को ही बीज बचे सब गाँव में फैलावे बीज ले करके रख रहे हैं इस बीज को। जब बुजुर्ग सियान कम से कम एक 70-75 का उम्र हो तन बीज ले बचा के रखे इतने सब बचा के रखबो तो आने वाले समय में काम पड़ी हमले। She has been named Manyaro, afternoon sun. That's the time she was born. For the evening, Shikari prepares. He's gathering seeds of wisdom for a time that belongs not to him, but to Manyaro and to all others who are yet to walk on this earth. ये कुल्थीदार है, कुल्थीदार ले हम गांव में फैला कोई दाई है लेसन बीज रख ले हो वो होइला। हां मोय के बीज रखबो बीज कुल्थी सीताई कुल्थी कोदो एकर नाम जोंदरी जुआर Ha ha ha.